Namaste everyone. Namaste Sujaji. I request you to take the session now. Wait a second. Yeah. Yes. Namaste everyone. Namaste Sudaji. I request Srimati Sudaji to continue the session now. Thank you, Lasya. Namaste, everyone. Namaste to all the young and also all the elders. Thank you all for joining and giving me and my students this opportunity of doing this Lalitha Sahasranama Parayana. So Sri Lalitha Sahasranamas are given by the Vashinya Vagdevatas who have come from Sri Lalita Devi herself, the Adi Parashakti, Tripura Sundari. So they have come from her and they chanted this Lalitha Sahasranama Stotram. So that is why Lalitha Sahasranama Stotram is the most powerful stotram out of all the stotrams. So today, being the Phalguna Masam, Phalguna Poornima, we'll be chanting Lalitha Sahasranamams Parayana, which is very, very powerful. Doing Lalitha Sahasranama Parayana during Poornima night, considered very, very auspicious and very powerful because Chandra is the manaskaraka, and doing Parayana in one platform all together at a particular time considered very, very auspicious. We bring lot of positive energy, positive Shakti, our grace will be more powerful. So before we start the Lalitha Sahasranama Parayana, I would like to explain few namams. Usually, this is a bunch of 8 namams. Today, which I wanted to explain, this is actually a 8 namas bunch. That is Bhavada Vasuda Vrishtihi Paparanya Davanala Daurbhagya Tula Vatula Jara Dvantara Viprabha Bhagyabdi Chandrika Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana Roga Parvata Dambolihi Mrityu Kutarika. So these are actually 4 lines starting from 143 to 144. So totally 4 lines and 8 namams. It's not possible to explain all the 8 namams in this session because this has a lot of explanation to be given. So I will do only 2 namams from the first line. That is Bhavada Vasuda Vrishtihi Paparanya Davanala. So only 2 I will be teaching. The rest I will continue in the next session. So what is the importance of this 4 lines or 8 namams? So this is a bunch. When chanted as a bunch, adding Om Shri Matre Namaha in the beginning and also at the end. So when chanted this 4 lines as a bunch with Shri Matre Namaha in the beginning and also Shri Matre Namaha in the end, what will happen? So this is, if one has done as a Nitya Parayana, this Namam, that person need not have to go to any Jyotisha. That means all the doshas which are there in the horoscope
or all the doshas which we have brought as fate in this life, everything will be washed off and everything will be taken care of by the Mata, by the Divine Mother. How we will see. So how many times we have to do will be the question. Any number of times you can do. By walking, you can do. Sitting, you can do. Just like that, cooking, while cooking, you can do. Because the whole horoscope, the whole jatakam, the whole fate, everything will be cleared and everything will, she will take care. You will only understand when you understand to do Lalitha Sahasranama Parayana also, and it is 9 o'clock. So if I continue all the Namam explanation in one session, we won't have enough time for the Parayana. And I don't want to end this session without the Parayana. And after the Parayana, we will be doing a Loka Kalyana prayer. I request everyone to stay till the end for the prayer, Loka Kalyana prayer, which is a very, very powerful shlokam that I will be chanting, which is given by the great Paramacharya of Kanchi, Sri Chandrasekhara Saraswati ji. So this prayer is for universal brotherhood and peace as enshrined by the Sanatana Dharma. So I would request everyone to be there till the end. We will do a Loka Kalyana prayer, which is the need of the hour, and we have to all together chant because we'll be doing Lalitha Sahasranama Parayana. So we will invite the goddess with all her beautiful, powerful Shakti names. So she will be there in the Parayana and she will bless all of us for Loka Kalyana. So coming back to the Nama. So these 8 Namams will, as I told you, will take out all the doshas from the horoscope or from the fate. First, these Namams have Jyotika Shastram also. These are Jyotika Shastra Namams that we will see in the next session. So first we'll see the literal meaning of the this Namam. I think it's enough. It's enough to share. You can look it up. Bhavada Vasudha Vrishtihi. This is one Nama. Usually people chant like Bhavada Vasudha Vrishtihi. That is wrong. So Bhavada Vasudha Vrishtihi is one name. So now we will split the Namam for explanation. Bhava. Bhava means samsaram. Samsaram means not the universe or Jagat. Here samsaram means our life, mana jeevitam. So in Telugu we call it as samsaram. In Hindi we call it as zindagi. In samsaram in Hindi means samsar means Jagat. That is not the meaning here. We have to take as our zindagi. Samsaram. Samsaram bhava means samsaram. Dava. Dava means Davagni. Davagni means Agni. So, and she is Sudha Bhavada Vasudha Vrishtihi. Sudha Vrishtihi. Sudha Vrishti means Amruta Varsham. Okay. We are drowned in the Agni of Samsaram. We are drowned in the Agni of Zindagi. So in our life, we are completely drowned in that Agni. How much Agni means? So much. It is not from one life. From so many lives we have been carrying. And this Agni cannot be washed off with one rain. It has to be Kumbha Varsham Kurvali. So it has to be a very, very powerful, terrestrial rain they call, right? So it has to be very powerful rain. And that is Amruta Varshini. And if it rains, the Agni will stop. But what about the heat inside?
So that also should be stopped. So the tapam. So tapatrayagni. Tapatrayagni means agni with all the tapam in it. So everything will be, she will wash it off, it seems. So Amrita Varshini is again two types. One rain, which she may say, I can give only this much. And there is another rain, which she will give as much as you want. So how much we want? As much as the Davagni can stop, until then we want that rain. So we want that big rain, isn't it? So not only that Agni, it has to also stop that heat inside that Agni. So superficially the Agni will get stopped, but inside it will be still hot, right? So when both the heat and the Agni, everything, when it goes off, how it will be? It will be Shanti, Shanti, Shanti. This Davagni, you know from when it is burning? It is burning from ages, from lives and lives. Like, you know, in forest, you see in the wild forest, trees will be burning for days, months. Recently, we have seen in the news in California, wildfire. It was just spreading over, and the whole air got so polluted. It was red in color. We have seen pictures, right? So like that, our lives are burning in that Agni, and she will stop that. And with that Amrita Varshini, she will stop that Tapatrayagni. That is why she is also called as Amrutaeshwari. So another meaning for this is Amrutam means Anandam. Amrutam means Moksham. So from the Sahasrara Kamalam, this is the Sahasrara Kamalam on the top of the head. So from there, she showers her energies, her Amrutam, through all the nadis. 72,000 nadis we have in our body. So when all of them get drenched in her Amrita Varshini, then the person attains mukti, moksha. So when she does that, she will give moksha also. That is another meaning. So the next Nama, we are moving to the next Nama. She is Amrita Varshini for Davagni. Somebody has unmuted. Can you please mute? Yes, ma'am. Please continue. Yeah, I'm muted. Yeah. So she is the Amrita Varshini for Davagni, but she is also Davanala. Davanala means she is again Agni. See the difference here. She is Amrita Varshini for Davagni, that is for the fire in us. She is Amrita Varshini, but she is also Davanala. Davanala means she is also Agni. Paparanya Davanala. Davanala means Agni. Paparanya. Papa Aranya. So Papalu, mana sins, our papas are like Aranyam, it seems. Like Aranyam. So if in a forest, if the forest is full of trees, and these trees are so spread across, and they are like woven from here and there like creepers, and so much of trees everywhere. So how can you trim them? Because they don't have an ending nor a beginning. They don't have an ending, they don't have a beginning. So how can you trim? So this has to be burnt. So she will burn all the papas. So that is Paparanya Davanala. So in samsaram, in our life, if we have pain, she is like a she's like a varsham. She's like water. Varsham, she like rain. She will cools down all the fire. So when we are
having papas, she is like a fire. She comes like a fire and burns off all the papas. So why they have compared papas with forest? Because in forest, nobody cultivates. So it grows on its own. The same way, our papas are also, we don't know. Most of the papas, they grow on its own. So there is no ending, no beginning. So if you tell one lie, it will lead to so many lies, isn't it? We'll think that, we'll somehow escape it by telling one lie. But, that will lead to so many lies. Like that, our papas are uncountable. And not only in this life, we have been carrying from so many lives. So from so many lives, when we are carrying, there is no beginning, there is no end, like the forest, how there is no beginning and no ending for the growth. Like that, you cannot trim nor cut nor reduce that. So it has to be burnt. So when one who does this namam with ekagrata, with Trishuddhi, means, from thought, word and mind, if you believe this and you do this every time, no need to go to a astrologer to show your horoscope. Means she will take care of all. Horoscope means what? When we have done so many karmas, that will show in our horoscope that this, you will meet with an accident, or something will happen to you or your children, or financial problems, or etc etc. So when this is done, all the problems will be handled by her. So one great saint said, it seems, this saint is none other than Sri Vishwanatha Sastri Garu. So he said, Ganga is not water, it seems. Ganga is the fire in the form of water, it seems. That means whoever goes to Ganga to take a dip with all the papas, she will burn it, it seems. With that water, with Ganga, with that water, she will burn all the papas, it seems. Because she will burn all the papas, so she is the fire in water form. That is his explanation. Sri Vishwanath Sastri Garu has said, it seems. So this is Bhavada Vasudha Vrishtihi Paparanya Davanala. But when you want to do, to safeguard your horoscope, to come out of all your papas and pain, Tapatrayagni, then you have to do all the 8 namams. So first you start with Om Shri Matre Namaha Bhavada Vasudha Vrishtihi Paparanya Davanala Taurbhagya Tula Vatula Jara Dvantara Viprabha Bhagyabdi Chandrika Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana Roga Parvata Dambolihi Mrutyudaru Kutharika. So the other 3 lines I will explain in the next class, next session. So every Poornima we will be having Lalitha Sahasranama Parayana. So every Poornima I will be explaining 2 or 3 or 4 depending upon the size of the explanation I will be explaining. So please join every Poornima and participate in the Parayana. So this is about for today, and we will start with the Parayana. I will start the shlokam, and my students will be chanting, taking forward all the namams. One by one, they will be chanting till the end. And after the Parayana, we'll do a small prayer. Please be. Shuklam Bharadaram Vishnum Seshivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Vagartha Viva Sampraktau Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya
मुख्यमौली स्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका. Start now. श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिकलसत्कचा कुरुविंदमणिश्रेणी कनत्कोटीरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभनासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदंब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंकयुगलीभूत तपनोडुपमंडला पद्मरागशिलाधर्ष परिभावि कपोलभूः नवविद्रुम बिंबश्री न्यक्कारिरदनश्चदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्ष दिगंतरा निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भस्तित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरा कनकागंध केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्याल वाल रोमाली लता फल कुचद्वयी लक्ष रोमलता धार्ता सम्मुन्नेय मध्यमा सन भारदलन्मध्य पट्टबंध वलित्रया अरुणारुण कौसुंब वस्त्र भास्वत्तटिकटी रत्नकिङ्किणीकारम्य रशनादाम भूषिता कामेशन्यात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजंगिका गूढ़गुल्फा कुर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नखदीदिति संचन्न मज्जन्तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिंजान्मणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा मराली मंद गमना महालावण्य शेवधी सर्वारुणा अनवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लवा तु मेरुमध्य शृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्मवैभवा
भंडासुर वधोद्युक्ति शक्ति सेना समन्विता समत्करी समारूढ़ सिंदूरवर सेविता अश्वारूढ़ धीष्टिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराचरधारूढ़ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनी काक्षिप्त बन्नी प्राकार मध्यगा भंड सैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्य पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता मंत्रिण्यंबा विरचित विषुक्त वधतोषिता विशुंग प्राणहरणा वाराही वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित गिरि श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुलिन खोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त निर्दग्ध सबंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्भागवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा घंटाधक्कटि पर्यंत मध्य कूट स्वरूपिणी शक्ति कूटैक तापन्न कट्य धोभाग धारिणी मूल मंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेवरा कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रराम्बुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महा आशक्तिः कुंडलिनी बिसतंतु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्य कुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वस्या भयापहा शांभवी शारदाराध्या सर्वाणी सर्वदायिनी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निबानना शांतोदरी शांतिमती निरादरा निरंजना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कमा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरावद्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधि निरीश्वरा निरागा रागमदिनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिंता निहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहंत्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधसमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निसंशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नासा मृत्युमदिनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलाचिकुरा निरापाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा तुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानादिक नादिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला साध्युति प्रधा
सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी ऋणप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिः महारतिः महाभोग महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर् महासिद्धिः महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर्य महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्टुपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी ध्यान ध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोदानकरी ईश्वरी सदाशिवा अनुग्रहदा पंचकृत्य परायणा भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फलप्रदा श्रुति सीमंत सिंधूरीकृत पादाब्ज पुधूलिका सकलागम संदोह सुक्ति संपुट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रधा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेय वर्जिता Manjula garu. Manju? Yeah. One second. Raja Sita Ragni. మీరు ఒక డివైస్ స్టాప్ చేయాలి. 2 డివైస్లు ఉంటే మీకు రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుందా అండి? నౌ ఐ యామ్ ఆడిబుల్. కంటిన్యూ. హలో, చదువు. యా. రాజార్చిత రాజ్ఞి రమ్యా రాజీవలోచన రంజనీ రమణీ రస్య రణత్ కింకిని మేఖలా రమా రాకేందు వదన रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रमा रमन लंपटा काम्या कामकला रूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगति कंदा
करुणारससागरा कलावती कलारूपा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वादिका वेदवेद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वंद्या वंदारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वन्नी मंडलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचनी संहृताशेषपाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्निसंतप्ता समाहल्दन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तममध्या तमोपहा चितस्तत्पदलक्षार्धा चिदेका रसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूता ब्रह्मध्यानंद संततिः परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता ओड्यान पीठ निलया बिंदु मंडलवासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता सद्या प्रसादिनी विश्वसाक्षिनी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता षड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणा सुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्थ शरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदालद कौमुदी भक्तहत तमोभेदा भानुसंततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवंकरी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा चिच्चक्ति चेतना रूपा जड़ शक्ति जड़ात्मिका गायत्री व्याहुति संध्या द्विज बृंदा निषेविता तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतरस्थिता निस्सीम महिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णी तरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा दृष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्ति स्वस्मितस्मति कान्तिरहि नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुभ्रुः शोभना सुरनायिका कालकंठी कांतिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना
खट्वाङ्गदी प्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसना प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृत्ता डाकिनीश्वरी अनाहताब्ज निलया श्यामा वदनद्वया दंशत्रोज्ज्वला क्षमालातिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्रैधि शक्त्योघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्टानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादिसमन्विता दद्यानसक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रस्थिसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदना सक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोधना प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वमतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तन पुलोमजाचित बंधमोचनी बंधुरालक विश्वरूपिणी विद्या वेदादि जगत प्रसूः सर्वव्याधि प्रशमनी सर्व मृत्यु निवारिणी अग्रगण्या चिन्त्य रूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहंत्री कमलाक्षनि सेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिनियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्रादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानाल सामत्ता मातृकावन्नरूपिणी महाकैलास निलया मृणाल मृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महा साम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किंकरीभूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा पालस्तेन्द्र धनुप्रभा हृदयस्था रवि प्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यान्त्री दक्ष यज्ञ विनाशिनी धरांशोलित दीर्घाक्षी धरहासोज्वलमुखी गुरुमूर्ति गुणनिधि गोमाता गुहा जन्मभूः देवेशी दंडनीतिस्थ दहराका स्वरूपिणी कति षण्मुख्य राकांत चिदि मंडल पूजिता कलात्मिक कलानादा काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता आदिशक्ति रमेयथा परमा पावना कृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह
त्रिंकारी केवला गुह्या कैवल्य प्रदायिनी त्रिपुरादि जगद्वन्द्या त्रिमूर्ति सिद्धकेश्वरी चक्षरी दिव्य गांधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्व वेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्राचिता लीला कप्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्य दृश्य रहिता विज्ञात्री वेदवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदा सत्रूपधारिणी अष्टमूर्तिर्रजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहति ब्रह्मणि ब्रह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिताः राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंदरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतिमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदि विद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जा रंबादिवंदिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्द चंद्रिका भक्ति चित्तिकेक घनागना रोग पर्वत दंभोलिर्मृत्युदारुकुठारिका माहेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपन्ना चंडिका चंडमुंडासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया विराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिण्यन्यस्तराज्यजूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रे गुण्या परापरा सत्यध्यानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवदिः
पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विभक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी चन्द्रसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा शान्त्यातीत कलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पना रहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्ध विग्रहा कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरांगिता कनकताटंका लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः संसार पंक निर्मग्ना समुधरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधार धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्र प्रिया विप्ररूपा विश्व भ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीर गोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञान कलना कल्या विद्गदा बैंडवासना तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिव कुटुंबिनी सव्यापसव्य मार्गस्था सर्वा पद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुकाम्बुजा कौलिनी केवलानाद्या कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या सर्वदा शम्भुमोहिनी दरादर सुधा धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधुककुसुम प्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिंदुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्री वसंकरी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनगाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी
अव्यात्सातिशयज्ञाता षडद्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्तद्वीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्यैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः। ॐ श्री उमादेव्यै नमः। ॐ श्री उमादेव्यै नमः। ॐ श्री उमादेव्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते। I request everyone to participate in this Loka Kalyana prayer. So this is a shloka that I am going to chant, which is written by Paramacharya Paramacharya of Kanchi, Sri Chandrasekhara Saraswati Garu. This is for the universal brotherhood and peace. So I request everyone to participate in this prayer. मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्रीं मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्रीं आत्मवदेव परामपि पश्यता आत्मवदेव परामपि पश्यता युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता त्यजत परेषोऽक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्रीं मैत्रीं भजता अखिल हृजयत्रीं जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यतदत्ता दयत्वं जनतां दाम्यतदत्ता जनत्वं जनता श्रेयो भूया सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां। Om Shanti Shanti Shanti
Namaste to everyone. Thank you so much for all the rendering by all my students. Thank you so much. Anybody has any questions to ask, you can ask me now. Before that, I would like to do a small announcement. We are starting the next batch for Soundarya Lahari, which will be on 17th May. Every Tuesday will be the classes, 7:30 p.m. to 8:30 p.m., 1 hour class. And Shivananda Lahari will be starting on 19th June, 3 p.m. to 4 p.m., which is on Sunday. All these are Indian timing that I'm speaking about. 19th June, every Sunday is the Shivananda Lahari class, 3 p.m. to 4 p.m. Indian time. Soundarya Lahari, 17th May, it's going to start 7:30 to 8:30 p.m. Indian time every Tuesday. So this is the announcement. If anybody is interested, you can call me. Yes. Anybody has any questions, you can ask me. No questions, only thanks. One more blissful day we had, and really we are getting more peacefulness when we chant this Lalitha Sahasranamam with a group. And I have to thank you for this opportunity. I'm not missing any class. Every Poornima, I'm waiting for that time to come. And you are making my day so meaningful. Thank you so much. Thanks, Ma. Thank you so much. Yeah, thank you, Sudha Garu. It was done so beautifully. Really enjoyed it. It's Thank really very, very touching. Absolutely brilliant. Thank you. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you, Amma, for another beautiful full moon day, which is like filled with so much of Amma's blessing and yours presence as well. Thank you. Very happy to see you. And thanks for your presence and Amma's blessing. Thank you, Amma. Okay. So shall we? Thank you, Sudha. Thank you very much. Thank you. Nice program. Very Sudha nice. Garu, thank you very much, Sudha Garu. Thanks, Amma. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sudhaji. Namaste, Sudhaji. Sudhaji, namaste. Namaste, Ganesh. Namaste, Ganesh. Yeah, namaste ji. Actually, I couldn't join from the beginning. I was held up in somewhere. With a lot of tension, I joined. But the very second after I joined, I don't know where all my tension went off. It has generated so much vibration, energy. It has got real power in it, Sudhaji. Thanks a lot. Thanks a lot for giving me back the energy, which I almost lost it. Thank you so much. Thank you. I did not give. The mother has given. Yeah. Thank you very much. Sure. Yeah. Okay, see you all in the Namaste. Thank you. Thank you. That is Poornima. Next Poornima. Yeah, thank you, Sudha Garu. Thank you so much, Akka. Thank you so much. Thank you, ma'am. So much, ma'am. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Sudha auntie. Thank you so much, Sudhaji. Thank you. Okay, see you all in the next session again next month, which will be on, I think, 18th. 18th or 19th. 18th, I think so. Okay, let me check.
16th, April 16th. It is on 16th April. Yeah. Next Poornima is on 16th April. You'll get the updates. Yes. Thank you so much, Ma. Bye. Thank you. Good night, all of you. Shubhratri. Yeah. Shubh Sai Ratri.